Preview. Okay, and we welcome to all of you the easy learning classes. And today I will discuss about my topic is electrostatic. It is your first topic of physics. I think all of you know that physics is not so typical subject, but the student feels difficulty to find out their problem in physics. So first of all, I want to tell you what is a physics. The question is arise, what is a physics? It is a branch of science. It is a branch of science in which we study about matter and energy. Matter and energy. This is the simple definition of फिज़िक्स. यानी कि फ़िज़िक्स आपसे पूछा जाए क्या है तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं कि फ़िज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर एंड एनर्जी. तो इसका मतलब ये है कि दुनिया दो चीज़ से मिलकर के बनी है. एक तो वो चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, एक वो चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती है. जो दिखाई नहीं देती है उन चीज़ों को हम एनर्जी बोलते हैं, जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी. और जो हमें दिखाई देता है, विजिबल है, दैट इज कॉल्ड मास. एवरीथिंग वी कैन से, एवरीथिंग. So we can say physics is nothing but it is a study of matter and energy. तो हम कह सकते हैं फिजिक्स क्या है. फिजिक्स जो भी हमें इस दुनिया में दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है वो सब फिजिक्स है. सो देयर विल बी डेफिनेटली सर्टेन कॉन्सेप्ट. देयर इज समथिंग लॉज that I study related to the chapter of physics. If I move with the help of leg, हमारा पैरों से चलना भी फिजिक्स है. हमारा इस चौक को पकड़ना, हम 3 फिंगर से चौक को पकड़ते हैं, इससे अपलिफ्ट करते हैं, इससे दबाते हैं, इससे साइड कंट्रोल करते हैं. हमारा बैठना, हमारा खड़ा होना सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कंसंट्रेटेड होता है. इट मीन्स वी टेक हेल्प फिजिक्स एवरीवेयर. हम इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम एसी चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम टीवी चलाते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी किसकी देन हुई? फिज़िक्स की देन हुई. इसका मतलब है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे लिए फ़िज़िक्स पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी सब्जेक्ट को. नाउ अब मैं थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहूँगा जिससे आप फिज़िक्स के इस चैप्टर को समझ सकें. इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू. दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स.
It is nothing but it is a branch of physics in which we study about static charge. It consists two words, electrostatics. Electro means electricity. Or static means charge at rest. Charge at rest. Generally people say, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसको हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं. I think not absolutely right. The proper word for it is charge due to friction. Charge due to friction. यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं. अब हम आते हैं चार्ज बहुत तरह से प्रोड्यूस किया जाता है. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ योर इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी. इट इज़ योर inherent property. Certain substances have the large number of free electrons, right? So the large number of free electron is, sometimes we can say it is a charge. जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है. कंसिडर एन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. I think all of you know this is the first orbit. It consists two electrons. It is strongly bounded by the nucleus. If I consider the another orbits, so definitely they are connected with the nucleus with loosely bounded. तो जो outer most के electrons होते हैं वो थोड़े से free electron होते हैं. उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. तो इस संसार में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो जरा सी भी अगर उन्हें कहीं से एनर्जी मिल जाए तो बाहर चले जाते हैं. सो दैट काइंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेव ऑफ एन सब्सटेंस is known, which I study in electrostatic. जैसे हम अपने ड्राई हेयर पे कॉम्ब करते हैं, कॉम्ब प्लास्टिक है, हेयर पे उसको मूव करें और दीवार के पास ले जाएं तो वो उससे चिपक जाता है, क्योंकि बैलून भी प्लास्टिक है और जो मटेरियल दीवार का होता है वो भी प्लास्टिक मेड है. तो वहाँ पर एक अट्रैक्शन पैदा हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण. तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हैव एन टेंडेंसी, इफ इट गेट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी समवेयर, सो दे विल गो आउटसाइड. तो ऐसे ही अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क में चले जाते हैं. तो जो लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड electrostatics. It means the charge due to friction is known as electrostatic. तो जो गेन करता है, गेन सब्सटेंस, गेन इलेक्ट्रॉन, get negative charge, get
negative charge substance lose electrons get positive charge, राइट। तो इसी तरह से ग्लास रॉड और सिल्क की तरह से एबोनाइट और फर भी है। तो दुनिया में बहुत सारी सब्सटेंस ऐसे हैं, जब हम उनको रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करते हैं तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक प्लस स्टैटिक, इट मीन्स चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ निकलते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड क्वांटाइजेशन। दिस इज व्हाट कॉल्ड quantization. A particular number transfer from one object to another object is known as quantization. Right? It is denoted by Q is equal to plus minus NE. What is Q? Q is charge. Q is represent here charge. What is N? Number of electrons. And what is E? This is 1.6 into 10 to the power minus 19. This is called charge on electron. This is what called charge on electron. Charge on electrons. Right? So this is what called. What is the unit of charge? The unit of charge is Coulomb. Unit of charge is Coulomb. तो क्यों है कूलम? क्योंकि इसको सबसे पहले कूलम नाम के साइंटिस्ट ने ही इन्वेस्टिगेशन जो किया था वो, सो उसी के नाम पर इसको कूलम बोल देते हैं। सो इफ आई एम इंटरेस्टेड टू से 1 कूलम चार्ज, so definitely I will say it is any. So how many number of electrons are there in a 1 coulomb charge? So I can say this will be 1.6 into 10 to the power minus 19. So this can be write down as 1.6 into 10 to the power 18 लिख करके और एक हम इधर ले लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं तो ये 100 हो जाता है।
तो हम कह सकते हैं 6.25 into 10 to the power 18. It means there will be a large number of electron transferred. So how many number of electron if somebody asks you? So you will say this is 6.25 into 10 to the power. So it means 6.25 into 10 to the power 18 be the number of electron, be the number of electrons in 1 coulomb charge, 1 coulomb charge. इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 यानी कि जब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को रब करते हैं, लाइक आई कैन से इफ ग्लास रॉड रब विद silk rod, so what happened, there is a nothing but is a electron transfer from one body to another body. if लोगों को शायद थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया होगा, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि what is electrostatics, it is nothing but इसका मतलब क्या है कि फिज़िक्स में हमने जो चार्ज एट रेस्ट पढ़ते हैं वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज ही प्रोड्यूस होता है, और भी हमारे पास दूसरे मेथड हैं। जैसे एक एसी जनरेटर में ले, उसमें एक कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो वहाँ भी चार्ज होते हैं, वहाँ पर भी चार्ज होते हैं, लेकिन वो चार्ज यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो डायनेमिक मोशन कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं कहलाता। अगर हम एक रॉड ले लें, कंडक्टिंग रॉड है, इसको इस तरफ हॉट कर दें और इस तरफ कोल्ड कर दें, कुछ मैनेजमेंट करें डिफरेंट टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर भागने लगेंगे, दे विल स्टार्ट टू मूव। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज, दिस इज कॉल्ड थर्मल चार्ज। देर इज सो मेनी अदर मेथड ऑल्सो टू प्रोड्यूस अ चार्ज, बट दे आर नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। Electrostatic charge doesn't mean it is the charge is in rest, maybe in motion. Now another concept I want to discuss here related to electrostatics, this is called induction method. Induction method. इंडक्शन मेथड जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक बैलून लें, बैलून को हम रब करते हैं, तो रब करने के बाद हम उसको दीवार के पास ले जाएं तो वो उससे चिपक जाता है, इसका मतलब स्टिकी हो जाता है। वो उससे क्यों चिपक जाता है? क्योंकि अगर बैलून के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो दीवार जो है हमारी, जो वॉल है, दैट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, दैट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक होने की वजह से उसमें अपोजिट चार्ज आ जाता है। तो मैं आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर सपोज ये आपकी एक चार्ज बॉडी है, किसी तरह से हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसके पास में दूसरी कंडक्टिंग प्लेट लाते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। या इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उसको एक कंडक्टिंग मटेरियल के पास लाते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसका मतलब अपोजिट चार्ज सेटअप हो जाता है, राइट। तो व्हाट इज इंडक्शन मेथड? अपोजिट चार्ज सेटअप, अपोजिट चार्ज सेटअप
on a conducting material, on a conducting material, if I placed it, if we placed it, if we placed it in front of other charge body, other charge बॉडी। इसका मतलब एक चार्ज बॉडी के पास में अगर हम दूसरी कंडक्टिंग बॉडी लाते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है, बट अपोजिट। इसका मतलब हमें पता लग गया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, राइट। तो अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को, एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, पास पास रखते हैं, या दो नेगेटिव चार्ज को पास पास रखते हैं, तो इन चार्ज के बीच में एक फोर्स सेटअप होता है। दिस इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव force, it means the force of repulsion, right। और दो अनलाइक चार्जेस को पास पास रखते हैं, so they feel attraction force, they feel attraction force, so it means that there is a attraction and repulsion between the two अनलाइक चार्ज एंड लाइक चार्ज, यानी दो अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है और दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन फोर्स पैदा होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स सेटअप हो जाता है दो चार्ज के बीच में। उसको सबसे पहले किसने पढ़ा? उसको सबसे पहले पढ़ा कूलम्स ने, तो वो हमारा क्या बन गया? कूलम्स लॉ बन गया, कूलम्स लॉ। व्हाट इज अ कूलम्स लॉ? से नथिंग। जब दो चार्जेस को हम थोड़ी दूरी पर रखते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस करता है। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन होगा, अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो रिपल्शन होगा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब एक रिपल्सिव फोर्स और एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करते हैं। So we can say the force of attraction and repulsion between the two charges is depend on the value of the charge placed, यानी कि यहाँ पर जो हमने चार्ज रखा है उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम, according to the Coulomb, the force of attraction, the force of attraction, attraction or repulsion, or repulsion is directly proportional, is directly
proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional proportional to the distance square. This is nothing but it is generally a statement of Coulombs law. It is generally a statement of Coulombs law. The force of attraction and repulsion is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the distance square. But there is a mathematical portion is also important to explain this concept. बिना उसके ये अधूरा है. So let us consider the two charges Q and one charges, and they are different magnitude placed at a distance of this. Let us consider Q plus and minus Q charge separated by a distance R, then according to definition, I can say F proportional to Q. So I can consider this is not positive and negative. This can be considered as general charge, right? So I can write down it Q1 and Q2. Those charges, I don't know whether they are positive, whether they are both are negative. One is positive and other is negative. So I can say this is R squared. So this can be write down as F. When I remove the proportional sign, I will write down this is by R square, where K is equal to 1 over 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 is called permittivity, permittivity. Its value is 8.85 into 10 to the power minus 12, right? So this unit will be equal to Newton meter square by Coulomb square. So this is what is nothing but it is a law of Coulomb. But this is an explanation as general. This is explanation a general. So it is a general method to explain the Coulombs law. General means I think it is not more informative. Students को अगर मैं पूछूं कि ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है तो शायद उनके लिए मुश्किल होगा बताना कि ये किसके ऊपर लग रहा है. So I will use another method
This is what called vector method to explain the Coulombs law. So here I want to discuss about vector method. So before to explain the vector method, I want to give you the certain information regarding it. यानी कि मैं आपको वेक्टर मेथड शुरू करने से पहले थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बता देता हूँ कि ये सपोज एक मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसको इसके ही यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है. इट इज़ अ मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वेक्टर कॉन्सेप्ट, यानी कि मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये यूनिट लॉ. सो दिस इज़ कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, दिस इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर which represent the direction in physics, direction in physics, right? Its role is nothing but to explain the direction only, और इससे ज़्यादा उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता. अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि F, so you will understand it is a force, then I write down 1 to 2. तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि F12 is the force experienced by Q1 by Q2. So what will be the direction? It will be either in this direction or in this. If it is attractive, so we can say this is the direction. If it is repulsive, this. So this can be write down as 2 to 1. So this is represented by unit vector. So how I will be write down mathematically it? The force on Q1 due to Q2 charge, So I can say this is 1 to 2, this is KQ1, this is R21, this is distance. So I think it is not typical for you, but this is not a proper explanation in vector. This is what is called magnitude. If I multiplied by a unit vector according to the concept of unit vector, this is magnitude, this is unit vector, so this will become a vector. So this is a mathematical explanation of Coulombs law in terms of vector method. Similarly, I can say the force on Q2 due to Q1. So I will write down F 2 to 1. So I will write down it here. This is F, this is 2 to 1. So what will be the direction? This direction is this, right? So I can say this is K, this is Q1, this is Q2, this is R1 to 2. But it is not complete till I will not multiply it by its unit vector. So what is this? This is nothing but this is an explanation of
Coulombs law in terms of vector method. तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है कि हम एक्सप्लेन ना कर पाएँ। तो अगर आपसे पूछा जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ जनरल मेथड, तो आप उसको जनरल मेथड में एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ आई आस्क यू कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर फॉर्म, तो आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। देयर इज़ ओनली डिफरेंस, नथिंग बट। तो कई बार क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, तो आप किसी भी मेथड में एक्सप्लेन कर आइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन जनरल मेथड, तो आप जनरल मेथड में करना होगा। इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन या एग्जामिनर आस्क यू अ क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म, तो आपको वेक्टर फॉर्म में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। So this is not a big problem for you, all of the students. So I think that you are feeling very comfort to study the physics. So if you want to study physics, just very cool down first yourself. It means इतने शांत मन से आप उसको चीज़ को सुनेंगे, उतना ही आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देयर इज ऑल्सो अगेन ए मेथड, एक और मेथड है जिससे हम कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पोजीशन वेक्टर फॉर्म, right? Suppose we consider a reference of frame. This is your reference of frame, and a positive test charge that is very small quantitatively is placed at O. So if I placed another particle here, so definitely it has certain position. This position is 1. Similarly, another charge is placed at the position vector of Q2, this is R2, right? If I say this is the force F12, so what will be the direction? The direction will be B2A. All of you know that this is 2 to 1, right? 2 to 1. So according to the addition law, I can say R2 unit vector is equal to R1. So I can say R2 to 1 unit vector will be is equal to R1 minus R2. Similarly, I can say R1 to 2, so it will be the reciprocal. It will be reciprocal. So it is not a typical problem for you to explain the thing in a form of position vector. Suppose I want to say the force between Q1 and Q2. So I can say F1 to 2 is equal to K Q1 Q2. This is 1 to 2 1. I think you know it is very simple and very basic. I will be multiplied according to the vector like this. So this is very informative according to I have studied in vector is here, right? Now, but if I put the value of these two from here, so it will become a vector in terms of position vector form.
So this is a vector. This is vector form and this is position vector form. So there is no more difference of this. Similarly, if I say the force between Q2 and Q1, the force between Q2 and Q1. Q2, yeah, the force due to Q1 on Q2. So I can say this will be the direction. This is R1 to 2. So this is 2, 1, this is K, this is Q1, this is Q2, this is 1 to 2, this is magnitude, this is multiplied by unit, right? So this is a vector form, but now you convert it into the position vector form is this. This is right, this is position vector. So this is nothing but this is a simply explanation of Coulombs law in terms of position vector. So today I will discuss about the term electrostatic, यानी कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा electrostatics. तो electrostatic क्या हो गया? It is a branch of physics in which we study about the charge at rest. Now what do you mean by the charge at rest? The meaning of charge rest is not a charge at rest. यानी कि रखे हुए चार्ज को हम रेस्ट चार्ज बोलते हैं. नहीं, दिस इज नॉट एक्चुअली द फ्रिक्शनल चार्ज को हम रेस्ट चार्ज. इट मीन्स द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन. चार्ज produced by the friction is known as rest charge. So can I produce a current due to electrostatic charge? Yes, if I make it movable, यानी किसी भी तरह से हम उसको मूव कराएं. जैसे एक बाल्टी लें, बाल्टी में पानी भरें, तो पानी भर जाता है. अब एक पाइप को निकाल के उसमें से एयर सक करके आप नीचे डाल दें, तो पानी धीरे 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 सारा निकल जाएगा बाल्टी से. तो ऐसे ही चार्ज होता है कि अगर एक बॉडी लें आप, उसको किसी भी तरह से आप चार्ज कर लें, इकट्ठा कर लें. सपोज ये एक आपकी बॉडी है, इसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर लिया किसी भी तरह से, एक कॉपर वायर से अब दूसरी कंडक्टिंग बॉडी से जोड़ दें, तो ये फ्लो करके इधर आ जाएगा, तो ये मोशन में आ गया. तो ये क्या कहलाएगा? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. करंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, राइट. इसका मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से करंट भी बना सकते हैं. क्या हम बनाते हैं? हाँ बनाते हैं. हम एक वंडीग्राफ जनरेटर था आपके 12th क्लास में, लेकिन वो अब ओमिटेड हो गया. इसका मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं. इसको हम इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे हम एसी जनरेटर में स्टार्ट करते हैं. एसी जनरेटर में क्या होता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है. लेकिन इसमें क्या है, पहले हमें चार्ज को इकट्ठा करना पड़ेगा. पहले जो चार्ज है वो इकट्ठा होगा, फिर हम इसको यूटिलाइज करेंगे. तो आई थिंक दैट यू आर लिसनिंग मी प्रॉपरली. इफ यू विल बी लिसन मी प्रॉपरली, तो इट इज़ नॉट so typical to understand the physics. When you will concentrate your mind on a blackboard what I am writing, so it will called a visualization memory in your mind. दोनों को मिला कर के अगर आप देखते हैं
तो एक लर्निंग प्रोसेस बन जाता है। तो जितना भी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे उतना ही चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो ये आपका एक फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स हमें बताता है पढ़ने के तरीके। फिज़िक्स कहता है कि आप बड़े कंसंट्रेशन से अगर अपने किसी भी काम को करते हैं तो आप डेफिनेटली सफल होते हैं। 1 या 2% चांस होता है जब आप उसमें असफल होते हैं। तो आपकी असफलता का दोष आपके ऊपर है। अपने किसी भी काम को आप करते हैं उसको बड़े डीपली कंसंट्रेशन से करें तो आपके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होगा। सो आई थिंक इट इज़ माई टुडेज लेक्चर। तो टुडे आई हैव स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो electrostatic is nothing but is a branch of physics in which we study about the charge. Yeah, I study about the charge at rest. So thank you very much for your concentration. So nice of you.